नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, बोलना किसे कहते हैं, समझना किसे कहते हैं, कैसे कैमरे के सामने आकर के कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, इन सारी बातों का मेरे जीवन में कोई औचित्य नहीं था अभी तक। मुझे नहीं पता था कि क्यों लोग इस पे इतना महत्व देते हैं, क्यों लोग इस पे बचपन से इतना काम करते हैं कि उनको आगे जा कर के इसके बेस पे ही वो प्रमोट होते हैं, इसके बेस पे ही वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं और हर चीज़ वो इसके बेस पे ही करते हैं। अगर मुझसे किसी ने आज के 20 साल पहले ये बात कही होती कि अगर तुम बजाय अपनी राइटिंग स्किल्स के अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हो, तो आज के 10 साल के बाद में आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। आई हैड नो आइडिया गाइज़, आई मीन रियली। बट व्हेन आई ग्रेजुएटेड and then I came to Delhi. I studied for about 1 year and I prepared for the government examination. Unfortunately, I could not clear it, but then I moved to the corporate field, and since then I've been working as a corporate employee. Now, the problem is that if you are a corporate employee and if you are a kind-hearted person and if you are very soft and very mild, you are a shy person and you are introvert kind of, and you do not put your views easily with the people, then they start giving you less value. I mean, in fact, they don't give you any value. It's you who understands that somebody is giving you some value, but actually I mean, everybody knows that you know nothing and you are good for nothing because you do not know the very basic thing, and that is speaking. Because you are a negative in speaking. I don't even say you are at zero, but you are in negative in speaking. So how can you say that you are a good person? You are I'm I mean, I accept the fact that you are humble, you are kind, you are generous, but these things do not matter, guys. It may matter in your personal life, but in corporate life these things are not matter. People are there to you know to outperform somebody else's. They don't care about you. Everybody care about himself or herself, and that's the harsh reality of this corporate field, guys. I mean, so इसी वजह से आपने आपने देखा होगा कि लोग कैसे इतने ज़्यादा लोगों से बात कर लेते हैं, कैसे मीटिंग्स कर लेते हैं, कैसे लोगों से डील कर लेते हैं, कैसे एक टीम को वो रन करते हैं। तो जब ये सब कुछ आप खुद सीख लोगे तो उसके बाद में आपको भी ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। अभी क्या है कि अभी आपको ये सब कुछ डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आपने कभी वो चीज़ ट्राई ही नहीं की है। सो मैं अभी उसी दौर से गुज़र रहा हूँ और when one day, God knows, when one day if I get a chance and if I get courage someday, maybe on that day I will have a team, or maybe I would be doing something else that would actually give me the great feeling, and I would be earning in lakhs on that particular point of time. So it depends, यार। बट अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो डेली रिकॉर्डिंग भी आपकी कुछ हद तक ही आपकी हेल्प करती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तब होती है जब आप रियल लाइफ में आप कुछ एग्जीक्यूट करते हो। सी आप प्रैक्टिस करते हो एक फेक इन्वायरमेंट में। इट्स अ फेक इन्वायरमेंट and it will not give you much value until you put yourself in a discomfort zone where there are people who are listening to you, who are looking at you, and if you start showing on those particular movements, then you will start expressing yourself at everywhere, at anywhere, I would say. So this is, I won't say that if you are recording in a single room and nobody is here to listen to you what you are saying, so it's a fake environment. It's not a real experience. So that is why I always say to people, start going outside and start making vlogs outside, or do whatever you want, but make sure कि आप कुछ बोल रहे हो वीडियोस में, आप कुछ कह रहे हो, लोगों के बारे में आप बता रहे हो। सो उस चीज़ से आपकी जो इंटेंसिटी है वॉइस की, दैट स्ट्रेंथन्स गाइस, बिलीव मी। क्योंकि इन माय केस I had zero experience in talking to the people at outside. I never talked to the people, never ever.
and which is why my communication skill is at zero level. I don't interact with the people. That's the harsh reality. And now I'm thinking to work on it, because if I don't work on it, I will not be a great leader, and if I'm not a great leader, I won't be a great achiever. So I will have to acquire that skill that is needed currently. अगर हम दुनिया में आके अपने फियर से ही हम नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो कल को जब कोई और भी बड़े बड़े चीज़ें होंगी लाइफ में, तो कैसे आप उसको हैंडल करोगे? अभी आपको पता ही नहीं कि ह्यूमिलिएशन क्या होती है, अभी आपको पता ही नहीं कि इंसल्ट क्या होती है, तो इन सब चीज़ों से आप पहले गो थ्रू करो यार। अंडरस्टैंड कि वो कौन सा पीक पॉइंट है जहाँ पे जाने के बाद में यू स्टार्ट नोटिसिंग कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता यार। मैटर करता है कि आप एक्चुअली में क्या करते हैं, और भले ही आप कुछ समय के लिए करें, बट आप कैसे करते हैं, हाउ डू यू फाइंड टाइम टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। And if you are able to do all of those things that you actually want to do, then you are on top. You have happiness, you have satisfaction, and you are doing great in your life. In my case, I just come here in the evening and I just start saying whatever comes to my mind, and it just give me the great feeling. And I don't even know कि इसमें से क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे कहता हूँ, आई जस्ट लव इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एक्सप्रेसिव, because for the many years I was not expressive guy. So it's high time for me to become expressive one, because if I'm expressive, I will be impressive. So that's very important, guys. And we'll do recording outside as well, no problem. So while going to the metro, or while coming from the metro, or while walking on the terrace or anywhere, if you have your iPhone 17, just start recording there. The more you record, the more you meet with the people, the more the more confident you will become. It won't happen in a day, it won't happen in a week or month, it will take some time, but keep on doing it. The more you will do, the more the more confidence you will gain, and that's what you needed, guys. Please start putting yourself in discomfort zone. I'll put myself and I will show that to you, and you can also do the same, because see, बस हमें लगता है कि हमें कोई देख रहा है, बट एक्चुअल में क्या है कि जितने भी जो भीड़ वहाँ पे होती है ना, हर इंसान अपने आप में एक इंडिविजुअल है, और उसके लिए भी जो लोग बाकी हैं वो सब भीड़ है, किसी और के लिए भी सब पूरी भीड़ है, बस वो एक इंडिविजुअल है। बट हमें ऐसा परसेप्शन आता है कि सभी लोग एक साथ वो है, एंड यू आर अलोन। सो डू नॉट थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। थिंक कि सभी लोग यहाँ पे अपने काम में व्यस्त हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग, how you are looking, how you are talking, they don't bother about you. So stop thinking about all of these things and start accepting the life, how it works and how it goes. Accept it with your open hand. Start putting your views openly with anyone. All right, so from today onwards, I want you to just make a commitment to yourself, open your camera and start saying, from now on, I, no matter what, will record one video every single day, irrespective of my mood, irrespective of my personal problems. I'll do recording every single day, because that's what gives me courage. That's what will lead me ultimately to the journey of being a disciplined guy, and that's what I want to do. That's what will give me actually happiness. All right, so with this note, I'm just ending my video here. If you like this video, please subscribe to my channel, and just guys, support me. I need your support, because without your support, I won't be able to grow. So guys, please join this channel if you are in the same field what I am doing here, then you can join it. Otherwise, no problem, you can simply skip my video, no problem, guys.
बट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. थैंक यू सो मच.